अब बात करते हैं साल 2002 में शुरू हुई वंडरला हॉलीडेज की। 5,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली वंडरला हॉलीडेज अम्यूजमेंट पार्क और रिजॉर्ट चलाती है। कंपनी के पास बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची में 3 अम्यूजमेंट पार्क है और ये बेंगलुरु में एक रिजॉर्ट भी ऑपरेट करते हैं। नतीजों की बात करें तो आय में 10% की वृद्धि दिखी है, 125 करोड़ के पास से दर्ज हुई है। हालांकि जब हम मुनाफे पर नजर डालते हैं 5% घटकर आई है, मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिला है। नतीजों के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहे हैं, नए अम्यूजमेंट पार्क्स पर इस समय क्या अपडेट है, कैपेक्स का कैसा प्लान है, आगे ग्रोथ आउटलुक, ऑफ कोर्स सारे मुद्दों पर विस्तार से बात होगी। हमारे साथ कंपनी के एमडी मिस्टर अरुण चितिलापल्ली जुड़ चुके हैं। मिस्टर चितिलापल्ली, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले तो नंबर्स पर ही मैं आपकी कमेंट्री चाहूंगी। हमने देखा है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स, आपकी आय जरूर बढ़ी है लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स पे हम नजर डालते हैं वो कमजोर यहाँ दिख रहे हैं। मार्जिन 50 से 44% पर आ गई है, पैट में, एबिटा में, सब में गिरावट दिखी है। क्या कारण रहा है? Thank you for having me on the show. So the big reason why the margins have dipped a little bit for Q3 is because we've added headcount to our company. We've added almost 60 people to our to our team. This is because we are adding new parks and a lot of new initiatives have been done. So that is one reason. The other reason is our marketing and sales promotion costs also have gone up. So these are the two reasons why the margin has slightly come down. ओके तो ये जो दो एक्टिविटीज की वजह से मार्जिन में प्रेशर आया है, ये क्वार्टर स्पेसिफिक ही है या आगे के क्वार्टर्स में भी इस तरह के आप कदम उठाते रहेंगे? गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन ट्रेंड कैसा दिख रहा है? So going forward, थोड़ा बहुत ऐसा ही रहेगा. We'll have a little bit of less margin compared to previous year. क्योंकि last year was the best year we had in terms of margins and footfalls. This year we are making new investments. बहुत नया investment आ रहा है new parks के लिए और new initiatives के लिए. So because of that, I think we'll see some small increase in costs. This is to be expected because we are also on an expansion mode and we are hiring people and we will be spending more on marketing and so on so forth. ओके चलिए, तो आगे कंपनी के निवेश और कैपेक्स पर तो बात करेंगे, लेकिन मेरा अगला सवाल आपके एफ&बी सेगमेंट के परफॉर्मेंस को लेकर है। किस प्रकार से इस तिमाही में ये जो पूरा फूड एंड बेवरेज सेगमेंट है इसका प्रदर्शन कैसा रहा है और करंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन टिकट स्पेंडिंग इज कमिंग ऑन टू योर रेवेन्यू? आगे इसको और बढ़ाने का क्या प्लान है? So last quarter में हमारा non-ticket spends एकदम बढ़िया था. We had almost 35% of our spends coming from non-ticket, which is I think one of the highest in India. So this is a deliberate move from our end. We want to make sure that people see value and they spend more on non-ticket initiatives in the park. So that will continue. I think we are seeing a lot of growth in the non-ticket spends. Last year, if you see, the non-ticket spends was only 25%. So we've got a 10% improvement in non-ticket spends, which I think is a deliberate initiatives. We've done a lot of events, a lot of new restaurants, a lot of new retail, options for people to come and spend. So these are all contributing factors to that. ओके और अभी इस पे फोकस आपका बढ़ेगा आगे भी? Yes. Non-ticket revenue for us is a focus going forward because, as you know, our parks are some of the parks are 15, 20 years old. Correct. So getting huge footfall growth is not, it's beyond a point. We don't see a huge growth coming. But at the same time, we are seeing that people are spending more and more money. Per cap spends बढ़ा रहे हैं. So because of that, non-ticket also will be a focus for us. ओके चलिए, अच्छा आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आरपू में पिछले क्वार्टर हमने ये रीसेंट क्वार्टर में देखा 6% की वायवा आधार पर बढ़त दिखी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1250 करोड़ टू आई थिंक 12.5 के आसपास ये रही है। तो मुझे जरा बताइए गोइंग फॉरवर्ड अगली तिमाही में ऑफ FY24 और नए वित्त वर्ष में दैट इज FY25 किस प्रकार के आरपीयूज में ग्रोथ की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? अगले साल में हमारा 10 to 15% ARPU growth you will see. That is because our non-ticket spends, like I said before, will be growing. Also, there will be a small increase in ticket prices, which we'll be doing every year.
So starting April, in fact, this quarter also you will see some growth in ticket prices. So this is a factor of whenever we add new attractions and rides, and whenever we see that there is value being created in the offering, we will increase ticket prices, and we've been able to do that consistently over the last many years. So I think that trend also will continue. अच्छा अच्छा हमने आपकी प्रेजेंटेशन में आपने ये मेंशन किया था कि ये जो आपकी ऑक्यूपेंसी है बंगलुरु के वंडरला रिजॉर्ट्स में, उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली है। आई थिंक 71% से गिरकर 58%, 58% के आसपास इस क्वार्टर में रही है वाई आधार पर। तो कोई कारण रहा है स्पेसिफिक इस गिरावट का, और गोइंग फॉरवर्ड आप किस तरह की ऑक्यूपेंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? So the reason why we lost some occupancy in the last quarter is we focused more on retail visitors as against corporate and groups. Last year in the same quarter, if you see, we had a lot of groups, and we had a lot of long stay guests who stayed in the resort. This year it's mostly retail, family based crowd. So if you look at our ARR has grown considerably in this quarter compared to corresponding quarter. But there is a dip in occupancy, which I think is normal because it's a little more seasonal. We don't expect retail footfalls to come all throughout the week. The retail footfalls for the resort happens mostly towards the weekend. So some dip in occupancy is normal. But at the same time, we wanted to improve our ARR, which is average room rent. That has gone up by almost 20%. So we are happy with the way it is shaped up. Again, we want to focus on more value-added offerings for our guests, which I think is the focus for the company. ओके, एंड विद दैट इन फोकस आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले वित्त वर्ष में फिर आप कैसी ऑक्यूपेंसी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? So going forward, I think we can see growth in occupancy for the resort also. अच्छा. We are also planning to add about 40 rooms to the resort in the next financial year. So once that happens, I think we'll see growth in revenues as well. We also are planning to add a convention center and a meeting space to the resort. So we can see a lot of change happening in the next financial year. ये आप अपने बंगलुरु रिजॉर्ट की बात कर रहे हैं, राइट? Correct. Bangalore. We are looking at expanding into the Bangalore resort. Once we see there is a growth in Bangalore resort, we are also looking at adding a resort to our Hyderabad project, but that will not happen immediately. Okay. उसकी टाइमलाइन क्या है, अगर आप शेयर कर सकें? That will be in FY26. We will make some plans and we'll announce it. Okay. अच्छा, हम आपके ओवरऑल फुटफॉल्स के बारे में इस क्वार्टर में बात करना चाह रहे थे। कितनी रही हैं, और यहाँ से पिछले साल के मुकाबले किस तरह की अब इंक्रीज है जो गोइंग फॉरवर्ड आने वाले समय में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? So our existing parks footfalls should grow by about 3 to 5% in coming years. Okay. That is our minimum, and we've been able to do that. But on top of that, we are also opening our new park in Bhubaneswar next financial year. So we are expecting an additional 5 to 6 lakh visitors there also. So that you'll see a jump in revenues next financial year owing to the opening of the new park. मैं ये समझना चाह रही थी कि गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का प्राइस ट्रेंड रहेगा, और वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे अगर आप हमें समझा सके कैसा प्राइस ट्रेंड अब तक रहा है? So if you look at the price changes compared to last year, I think there's a 6% increase for Q3. Maybe slightly higher you can expect for Q4. And then on top of this year, I think you will see another 7 to 8% change for the next financial year. So that's the way we usually work. Between 7 and 10% price hike you can expect. And on top of that, we'll also expect about 3 to 5% footfall growth. So that gives you a rough idea. Okay. हमने जब आपसे बात की, आपने कहा कि ये जो भुवनेश्वर पार्क भी है वो अगले वित्त वर्ष तैयार हो जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी प्रेस रिलीज में कहा था आपने कि जो नया वित्त वर्ष है, दैट्स FY25, उसकी पहली तिमाही से भी पहले अहेड ऑफ Q1 you'll be opening द पार्क। तो मैं जानना चाह रही थी कि क्या आप ये जो पूरी तिमाही है, फर्स्ट क्वार्टर है, ये यूटिलाइज कर पाएंगे, और किस तरह की एक्सपेक्टेशन है गोइंग फॉरवर्ड इस पार्क से अभी? So our plan to open Bhubaneswar was actually for Q3 of FY25, but I'm happy to report that we should be able to open sometime late of Q1. So we won't get all of Q1,
but we'll get part of it at least one full of June. We hope to the end of May is the time that we are looking at launching the park, because we want to capitalize on the summer footfalls, because one summer for us is a big quarter. So that is the plan. We hope to complete all the work and the pre-launch phase by that time. And I think we are on track to do that. So you can expect an additional footfall of roughly 5 lakhs for a full year. So because we won't get the full year, maybe 4 to 5 lakh footfalls we can expect in the next year. और आपकी आय में किस प्रकार का योगदान एंटिसिपेटेड है? टर्न अराउंड यहाँ से इस पार्क से कब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? We expect the new park to be EBITDA positive from year one, but more than that, it's hard to predict exactly how the first year will go, because first year is always launch year, so there will be obviously extra marketing and other costs. But all said and done, I think we are confident that it will be a EBITDA positive kind of performance from Bhubaneswar. Also, the Bhubaneswar park for us is a smaller project compared to other cities, because it's in a tier 2 city. So we are not expecting huge numbers like for example Bangalore. We are expecting only 60% of that kind of footfalls, and that's the kind of number that we're looking at. ओके और जो चेन्नई पार्क जिसका आपने जिक्र किया FY 26 तक खुलेगा, वो बंगलुरु एंड भुवनेश्वर के मुकाबले where does that stand? उसको लेके क्या एक्सपेक्टेशन है? So for us, Chennai will be a tier 1 city project. It will be a large amusement park like Bangalore. So we are expecting footfalls in, like how we will expect in Bangalore, which is our flagship park. So similar kind of numbers. But of course, there will be a ramp up. First, it will take 2 to 3 years for any new park to ramp up to a full footfalls. So the first year will be a launch year, and then followed by growth years. So I think that's the way we have planned it. So we can expect Chennai also to come sometime in Q2 or Q3 of FY 26. अच्छा, और कैपेक्स क्या रहा है इन दोनों पार्क्स के लिए गोइंग फॉरवर्ड, और कितना आप स्पेंड करने पर विचार कर रहे हैं, अगर उसकी कुछ डिटेल्स दे पाते? We have spent close to 100 crores in Orissa as we speak, and another 60-70 crores. I think we will finish it. The Chennai park for us is the larger project. We are projecting roughly around 490 crores, 490 to 500 crore kind of number. We've spent about 150 crores in Chennai. ओके अरुण जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ना सिर्फ नतीजों पे बल्कि कंपनी के कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर भी इतने विस्तार से दर्शकों को के साथ डिटेल साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कॉर्पोरेट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।